ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಟರ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ಎಲ್ಲ ನಿಕಾಯಗಳ ಡೀನರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗದ ಆದರೆ ಅವರ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಗೈರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಕೋಲೇಜ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ತಾವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪದವೀಧರರಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಮಗೆಲ್ಲ honorary degrees to eminent persons. ಫೆಬ್ರವರಿ 1949ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಂಎ ಪದವಿ ಪಡೆದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದ ಪಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡವರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಗೀತ ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣಿದಯಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮತ್ತು ಸನ್ನಡತೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವದ ಕುರಿತಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರಗಳ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಟೀಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್, ಪಿಡುಗುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಸಮಾಜದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of Mandya University, I admit Professor Jayaprakash Gowda, Education and Literature, and Shri Pratap Madhukar Kamath, Entrepreneurship and Environment, and Dr. H.S. Nishkal Gowda, Women Empowerment and Social Service on his CASA.
concerned. D. Faculty of Arts. With the candidates for the degrees of Master of Arts in Kannada, English, History, Economics, Political Science, Honours, stand up and go to the Chancellor. Honorable Chancellor, I wish to prove qualified for the said degrees to which I pray they may be admitted. Let the candidates for the degree of Master of Commerce, Bachelor of Commerce, Bachelor of Business Administration stand up and go to the Chancellor. Candidates named in the list for the above said degrees. They have the said degrees to which I pray they may be admitted. And Commerce and Management. I also admit the rest of the candidate whose name are set out in the list to the respective degrees in absentia, and the candidate whose names are set out in the list but have not yet submitted the prescribed application to the respective degrees in absentia. I suggest you that ever in your life and conversation you shall prove yourself worthy of the same. Thank you. MA Economics second rank holder Sachin Kumar K. MA Economics third rank holder Vijay Kumar H. Endowment by the college top scorer MA in History Sunita Ashoka Chavadala and the first rank holder. Srimati Shashikala, Associate Professor of Political, Postgraduate Political Science. Srimati V.C. Gaurama and V. Siddhaya, Honorable, is a Postgraduate Political Science Endowment and College Top Scorer and First Rank Holder Anil Kumar B.K. Second Rank Holder in MA Political Science, Nayana S. Third Rank Holder in MA Political Science, Kusuma J. College Endowment Top Scorer in MA Sociology and First Rank Holder Sujata H.R. Ramaya Doddatayamma, Tandasanahalli, Karnataka History and College Endowment Top Scorer and First Rank Holder in BA Krishnakant E.S. Second Rank Holder in BA Ruchita H.L. Third Rank Holder in BA Karthik H.C. Puttamani Siddegowda, Panakanahalli, Kannada Optional Charity and Srimati M. Srilata and Master K. Malgegowda, Kannada Optional Charity in BA, 4th rank holder Harisha S.N. 5th rank holder in BA, Purvika Y.R. 7th rank holder in BA, Rakshita K.R. Mr. T. Timmegowda, retired IAS President, Karnataka Co-Parishad in Economics and Postgraduate Endowment in BA, and the 8th rank holder Sunil Kumar A. 9th rank holder in BA, Jai Bora. 10th rank holder in BA, Varshini C.R. D. Faculty of Science and Technology. Faculty of Science. Honorable Chancellor, I request you to kindly present endowment cash prizes and rank certificates to the candidates. MSc in Chemistry, endowed by the college top scorer, first rank, Panchashri Aradhya. MSc Chemistry, second rank, Pooja Shri C. MSc Chemistry, third rank, Ranjita M. Endowed by the college top scorer and Mr. P. Narasimha Swami, Vidyanagar Mandya, postgraduate MSc Computer Science Endowment, Manoj CL, first rank. Postgraduate MSc Physics Scholarship from Alvin Scientific Company, Bangalore, and endowed by the college top scorer in MSc Physics, Pragati V, first rank. MSc Physics, Vidyashri MC, second rank. Endowed by the college top scorer in MSc Mathematics, Tejaswini BL, first rank. Endowed by the college top scorer in MSc Psychology, Nayana SN, first rank. Endowed by the college top scorer in MSc Geography, Bhumika HS, first rank. Endowed by the college top scorer in BSc, first rank, Krutika SM.
Miss Malati and Dr. Siddharamaya, BSc Botany Endowment. Hitesh Gowda GR, second rank. Monisha BM, BSc third rank. Soundarya PS, BSc fourth rank. Ranjita SR, BSc fifth rank. Geeta G, BSc sixth rank. Deepak C, BSc seventh rank. Pooja DS, BSc 8th rank. Gautam MK, BSc 9th rank. Gautami R, BSc 10th rank. Now BCA, endowed by the college top scorer, BCA first rank, Sinchana HK. BCA second rank, Spandana KM. BCA third rank, Rakshita LK. BCA fourth rank, MT Sonakshi. BCA fifth rank, Sandeep PS. BCA sixth rank, Sanjana KM. BCA 7th rank, Darshan HK. BCA 8th rank, Chandan Shekhar TS. BCA 9th rank, Priyanka CS. BCA 10th rank, Tanuja C. Thank you. Dean, Faculty of Commerce and Management. Faculty of Commerce and Management, Honorable Chancellor, I request you to present the endowment cash prizes and the rank certificates to the candidates. Under the M.Com category, endowed by the college top scorer, Ashita T.S., first rank. Ashita T.S., first rank. Suchitraya, second rank. Rakshita HK, fourth rank. Chaitra DK, sixth rank. Vajramani HB, seventh rank. Anusha K, eighth rank. Under the B.Com category, endowed by the college top scorer, Arpita T.S., first rank. Chandana N, second rank. Chaitra DJ, third rank. Lata SS, fourth rank. Sinchana B, fifth rank. Pritam, sixth rank. Radhika C, seventh rank. Sneha Vaikil, eighth rank. Devraju B, ninth rank. Mansa HS, 10th rank. Under the BBM category, endowed by the college top scorer, first rank. Pujika BA, second rank. Jivita HM, third rank. Monisha,
4th rank. Arun Kumar R, 5th rank. Sudeep S, 6th rank. Chaitanya, 7th rank. Murli GA, 8th rank. Yashaswini VN, 9th rank. Saujanya HM, 10th rank. Under the NSS category, endowed by the college top scorer, Kushal Gowda, PR. Shivraj CR. And Kamalama Siddhayat, Samprali Sports Endowment, Sachin M. Thank you. Thank you. In 2021, he received the Golden Book Awards in. The dignitaries present here on the dais, dear colleagues and my beloved students. Coming to Mandya, this is my second time I'm coming here, and every time I come and see, I see a lot of development happening, and I'm sure that the college management and the authorities are doing their level best to make sure this university becomes the world-based university in the coming years. So without further ado, generally since it's a convocation address, I'm supposed to read it out. So I'll read it a few of the pages so that I don't take a lot of time on them. Anyway, I, Dr. Shomdana Bandopadhyay, is the director of NIH, that is NSSHM Institute of Health Sciences, NSHM Kolkata. And it is an honor to be the chief guest in this conference, in this convocation. At the very onset, that I want to thank from my heart, that is Dr. K. Shivachittappa, who is the Vice Chancellor of the university, and he has been doing a dynamic work. He has been constantly trying to develop the university, trying to make more MOUs, more collaboration, so that the students from the university can go to different national and international institutes and do their work and research. So that's a very good work that sir is doing. I thank Dr. B. and Veena, Registrar of the University. Madam has been very dynamic. She had come to Calcutta to our institute, and we have seen her how dynamically she is developing the institution. I thank Professor K. Yoga Narsimhacharya, so my pronunciation if it's a bit wrong, that is Register Evaluation, for his dynamic work. And in a convocation like this, the major work is of the register evaluation. He has to make sure that all the names of the students and everything is correct and everything is proper. Now for the students, you are going into a dynamic world, a world which is constantly changing. You are going to a world where there is a lot of political, economical and social problems that are there. So we see a 3-year war going on between Russia and Ukraine. We see a conflict between Iran and Israel. The day before yesterday we are seeing in the news. So a lot of challenges are there. And AI coming in, artificial intelligence coming in, that will challenge your intellectuality. So a lot of challenges you are going into. Now in your university, you were handhold. Everybody was there for you. Your faculty members, your parents. Now once you are into the industry, there will be challenges, there will be competition. So whatever you have learned from the institution, from the university, whatever you have learned from your faculty members, whatever you have learned from your parents, the social code that you have learned, keep that in mind. Make sure that you work very hard, take the knowledge forward, and make sure you become a very good person in the life. Now, I want to come to this part that the graduate student of Mandya University, today is your day. It is your day. You have to enjoy the day with your parents, with your family members. Always remember that you are not graduating alone. You are graduating with your family members because they have really worked hard. If they were not there, today we will not be there. So wherever you reach after a few years, make sure you are grounded, you acknowledge your parents, your family members, and try to develop the name of the university, take the name of the university forward. Now,
Too much I will not talk about convocation, because I know convocation is a very important part of every student's life. So any student sitting here must be very proud, and those who came and took photographs, I think you'll keep these photographs after 30-40 years. Once you look back at the photographs, you'll see your college days, you will cherish the memories of your university, the greeneries of your university, the friendship of your university, the friends that you had, the classes maybe you have bunked or maybe you haven't bunked, all the good parts and the bad parts, whatever you have done. So these will stay in you, because after, once you are in the industry, it's kind of monotonous. A lot of work is there, you're working for money, so all this fun, frolic is not there. And then your faculty members who are the heart of the university, who have guided you, who have taken the hard work to make sure that you are learning. Sometimes they have rebuked you, sometimes they have loved you, but they are the heart, and never forget your faculty members, because for them, what you are today and what you will be tomorrow. Now, coming to Mandya University, I have been in several universities throughout the world. Very recently, I was in the University of Naples, Italy. I can say this university is growing very fast, and a dynamic leader like K. Shivajitra Prasad, I'm sure, and the faculty members that are supporting him, I'm sure this university will go to great heights. I really think that this university needs more collaboration with the international fraternity, so that the students of the university can go to different countries, try to understand the different forms of teaching, their pedagogy, their research related activities, and once you do that, then you grow. The problem what happens is that if you're stuck to one place, then the whole holistical development doesn't come. So a bit of this, I think the university can go to really great heights. Now for the students who are going out from here, make sure that if you are into research, do further research. If you are into studies, do further studies. And those who are entering the organizations of the industry, give your 100%. Always remember, everybody will remember who you, from where did you pass. So if you are a good student, they will say, yeah, Mandya University was good. If you are not working properly, then it will come to the university. So you are representing the university, keep that in mind. As I told you, I will not prolong too much of my speech. I really hope the university very best. I thank the authorities for this excellent work. I thank Governor Sir for coming and making time from his busy schedule. And once the Chancellor is here and he is giving the degree to you, it is an honor for all of you. I really hope that the university really grows. And I thank again Registrar Sir, Registry Evaluation, and the Vice Chancellor Sir. Thank you so much. Jai Hind. दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर उमेंद्र नाथ बंदोपाध्याय जी, इनका उद्बोधन अभी आपने सबने सुना। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर के शिव चितप्पा जी, रजिस्ट्रार श्रीमती BN वीना जी, इंचार्ज मूल्यांकन रजिस्ट्रार प्रोफेसर के योग नरसिम्हाचार्य जी, सिंडिकेट एवं अकादमिक परिषद के सम्माननीय सदस्यगण, मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सम्माननीय महानुभाव, विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यगण, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी और उनके परिजन, उपस्थित सभी विद्यार्थीगण, सम्माननीय अतिथिगण एवं मीडिया के महानुभाव, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ। दीक्षांत समारोह का यह दिन विश्वविद्यालय विद्यार्थियों, उनके परिवारजनों के लिए गर्व और आत्मसंतोष का क्षण है। मैं इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। प्रसन्नता का विषय है कि आज इस दीक्षांत समारोह में शिक्षा, साहित्य, पर्यावरण एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने के लिए प्रोफेसर श्री जयप्रकाश गौड़ा जी, श्री प्रताप मधुकर कामत जी एवं डॉक्टर HS निष्कर गौड़ा जी को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। मैं उनको मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि जिस बात के लिए आपको ये सम्मान प्राप्त हुआ है, इस काम को आगे भी जीवन पर्यंत करते रहें
ताकि भविष्य में भी इसी प्रकार से आप सम्मान प्राप्त करते रहें। और आज इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को भी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज का यह विशेष दिन जो आपके जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है, अब आप शिक्षा के पद से अनुभव और कर्म के पद पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। इसमें आपको इस पर सफलता दे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। मैं इस विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, प्रशासनिक कर्मचारियों और अभिभावकों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इन विद्यार्थियों के जीवन को संवारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस विश्वविद्यालय को भी याद रखें और अपने माता पिता और शिक्षकों को और गुरुजनों को भी याद रखें। उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहें ताकि आपका जीवन सार्थक हो। आपके समक्ष नई नई चुनौतियां और अवसर होंगे। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान से प्राप्त ज्ञान और कौशल के बल पर आप उन चुनौतियों का सामना करने और उभरते अवसरों का लाभ उठा करके जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। जीवन की सफलता में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। शिक्षा के कौशल में वृद्धि होती है और जिस क्षेत्र में हमारी रुचि हो उसमें हम कुशल होकर अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। आपको ये भी ध्यान होगा कि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, शिक्षा कभी चोरी नहीं होती। शिक्षा का जितना प्रचार प्रसार आप करेंगे उतना ही आपको कंठस्थ याद होगा और इसको जब आप प्रचारित करेंगे तो जिसको इसका लाभ मिलेगा वो आपके प्रति सद्भावना और सम्मान के भाव रखेगा। आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि प्राचीन काल में हमारी शिक्षा प्रणाली हमारा ज्ञान विज्ञान में योगदान के साथ साथ भारत धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र था और सशक्त अर्थव्यवस्था के कारण आर्थिक रूप से भी समृद्ध था। आज भी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के देशों की तुलना में चौथे स्थान पर है। देशवासियों की इच्छा आकांक्षा के अनुसार सरकारों ने ये निर्णय लिया है कि इसको और उच्च स्तर पर पहुंचाएं, दुनिया के देशों की तुलना में तीसरे स्थान पर पहुंचाएं। आप जो भी कारोबार करें इस बात का प्रयास करें कि देश की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हो। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री ब्रह्मांड के वैज्ञानिक सिद्धांतों की समझ रखते थे। भारतीय खगोल शास्त्र की जड़ें वेदों में मिलती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में खगोलीय घटनाओं का उल्लेख मिलता है। आपको और सबको जानकारी होगी कि भारतीयों ने खगोल से लेकर भूविज्ञान, गणित, चिकित्सा और अन्य कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गणित में शून्य एवं दशमलव की खोज भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्रियों ने ही दी है, जिसके कारण आज दुनिया में संचालन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा साइंस, सतत विकास और उद्यमिता जैसे क्षेत्र हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। आपको हमेशा नवीनतम तकनीकों और विचारों के साथ खुद को अपडेट रखना होगा। आप सब जानते हैं कि आज के युग में ये प्रतिस्पर्धा का युग है। जो जितना निरंतर अध्ययन करता रहेगा, जीवन पर्यंत अपने आप को विद्यार्थी मान करके कुछ न कुछ सीखता रहेगा, वो अपना जीवन सफल करेगा। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण जैसी वैश्विक चुनौतियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करने की महती आवश्यकता है। आशा है आप इन वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अपना योगदान देंगे। वृक्ष संरक्षण करेंगे, वायु संरक्षण करेंगे और जल संरक्षण करके आने वाली पीढ़ी को भी सुगमता से जीवन जीने का
प्रयास करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के लिए मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने में आप अपना योगदान दें और देश को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास करने में सहयोग करें। आप और हम सब जानते हैं कि देश की आज़ादी के 100 साल 2047 में पूरे होंगे और आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ जब हम मनाएंगे तो देश की आज़ादी के दीवानों ने जो सपना संजोया था कि एक दिन फिर से भारत विश्व गुरु होगा, सोने की चिड़िया बनेगा और विकसित राष्ट्र बनेगा, उनके सपनों को साकार करने में आप अपना योगदान दें, ऐसा मेरा अनुरोध है। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने कार्यों, आचरण और उपलब्धियों से इस संस्थान का नाम रोशन करेंगे। आप अपने ज्ञान, कौशल और मूल्यों का उपयोग समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए करेंगे। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಧಿಕಾ. ನಾನು 2021ರಿಂದ 24ನೇ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಕರೆಸಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಿಸಿರೋದು. ಅದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ MSc ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಪದವಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು? ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವರಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಇದೆ ಸರ್. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬೆಸುಗೆ,